अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संडे ब्रंच विद लुबना। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग TV1। वी नो यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइसेस एंड यू चूज़ TV1, सो थैंक यू फॉर दैट। उम्मीद है आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी गुजर रही होगी, आप लोगों का हर दिन अच्छा गुजरे, आप लोगों का महीना साल ढेर सारी खुशियों के साथ। एंड ऑफ कोर्स आई डू वांट टू गिव आउट द नंबर इफ़ यू वांट टू कॉल इन एंड गिव योर थॉट्स, योर कमेंट्स, योर सजेशंस। हमारा नंबर है 855-886-6387 एक्सटेंशन 4। ये एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इस शो तक पहुंचना है, यू हैव टू पुट द एक्सटेंशन इन। एंड ऑफ कोर्स आई वेलकम योर कमेंट्स, आई वेलकम योर थॉट्स। अगर आपने हमारे जो मेहमान हैं आज के उनसे बात करना है, या कि जो पहले के मेहमान हैं उनसे वांट टू कांटेक्ट दैम, certainly you can do that. Another thing I wanted to say, which I'm not sure if I've said before, कि अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई टैलेंट है या आपकी कोई ख़ास बात है या आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, you want to be on the show, then definitely I would welcome you. You can email us or call us. चूँकि TV1 जो है वो पूरे US में देखा जा रहा है, इस वक्त पूरे कनाडा में देखा जा रहा है। ह्यूस्टन से आप देख ही रहे हैं, ह्यूस्टन में जो लोग देख रहे हैं, but it's basically all throughout. माशाल्लाह I have to say TV1 शुरू यहाँ पे TV1 ने किया है, और कहते नहीं कदम बहुत मजबूत हो रहे हैं। आप न्यूयॉर्क से प्रोग्राम्स देखते हैं, आप ह्यूस्टन से प्रोग्राम्स देखते हैं, कुछ देर में आप डैलस शिकागो के देख रहे हैं कुछ शोज़, आप वर्जीनिया, वाशिंगटन। सो यू कैन सी माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से, विद योर लव एंड सपोर्ट, TV1 माशाल्लाह आगे जा रहा है और आप लोगों का साथ हमारे साथ है। एनीवे, मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, दोज ऑफ यू दैट आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या होता है इस शो पे। इस शो पे वो लोग आते हैं जिन लोगों ने कुछ अच्छा किया है, कुछ टैलेंट है, कोई ख़ास बात है, या डजंट मैटर हाउ बिग दे आर, हाउ स्मॉल दे आर, पीपल हु आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स। लेकिन वही बात है कि कोई रोशनी डाले, कोई बताए इनके बारे में, या ख़ुद आप देखें उनको और कह रहे भाई लुक एट दैट। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ देयर इज़ also inspiration for a lot of people out there. So that's what this show is, because I think अगर हम एक community हैं तो क्यों नहीं एक दूसरे को support करें और अच्छी बातें लेके आएँ, अच्छी बातें करें। और ज़ाहिर टॉपिक भी होगा लेकिन कुछ देर में। चले आज के हम गेस्ट को भी मिलाते हैं आप लोगों के साथ। Again, you can see the email address and the phone number. So let's start today's program. हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनका नाम है फ़हीम सुमानी, who is a calligrapher and sculpture artist. Assalamu alaikum and welcome to the show. Alaikum. Thanks for having me. Good. And our second guest is Samia Nazir, who is acrylics and mixed media artist. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you. Thank you for hosting us. No problem. Thank you. और आप लोग समझ होंगे आर्टिस्ट की बात हो रही है, और one thing I want to say, which is funny, you know, when it comes to art, I know you all also do Islamic art. So I'll start off with you, Fahim. हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, आपके ख्याल में इस्लामिक आर्ट में तो होगी, उम्मीद यही है, राइट? लेकिन उसके अलावा जो नॉन साउथ एशियंस हैं, क्या वो भी आ रहे हैं इस चीज़ के अंदर? बिल्कुल. I think art is not limited Right. to any person or any community or anyone. I think it's a pretty broad genre. I believe. I think now the awareness is going as much as higher than what it was in the past. So I think time has been changing, and it's from, I guess, it's starting from the young ages now. So I think it's going. Okay. And do you? I know that you had told me that you've been doing painting for a while. तो कब से आपने शुरू किया और ये शौक कैसे उठा कि एक दिन crayons पकड़े और तब से बचपन से शुरू हुआ कि कब से? So I mean, I'm joking about this, but honestly, when did you start painting? So I initially started calligraphy when I was 13-year-old back in Pakistan, and I think I got started by looking at the different fonts and within Islamic art. Right. As it is, you can see it that there is so much history in it, right, within it, and it's so fascinating. And even though at that time it was not as going to be that professionally that I was going to do, but I took an interest in that. I was start exploring that, and then 1999, I believe, I started exploring painting, mixed media, and stuff like that. And did you have many times people say, artist or even like TV shows, people think ये नौकरी नहीं है या कि ये एक काम नहीं है. Is it like the passion that you do this because you're good at this, or you always wanting to do this? No, I guess I'm glad you asked this question, because I know, especially in our community or the the community that we live within, right.
art has not been as promoted. I guess even in journal community is not as promoted, or until unless you've been a super hit, or I guess you've been click, or your art has been well renowned, or then it's a different story. But when it comes to, I guess I wanted to say for myself that yeah, I took it as a hobby initially, but moving forward, I guess I felt it that no, I want to take this as a further level, to the further level, and make it as my passion and make it as my career. And so I guess in today's, I guess आज की तारीख में तो मैं यही कह सकता हूँ कि no, I don't want to give up on this, and I want to take it to, I guess it's just the beginning, even though it's been doing for several years, but I feel like and that was the whole point of having you on the show, कि ताकि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो जाएं आर्ट के, इस्लामिक आर्ट की तरफ, लेकिन होता है कि, and I shouldn't say this, but even with me, and it's funny how I'm saying this, कभी कभार मैं कुछ बातें कह देती हूँ, बाद में कहती हूँ ये मैंने बात कैसे कह दी, कि कभी कभार कुछ चीज़ें आप करें ना ज़िंदगी में, for example artist, even I'm talking about a TV program, even different fields, even doing anything, you know, for designing or anything, क्योंकि हमारा जो concept है South Asians का, if you're not this so and so person, then you're nothing. Okay, they don't. The support is so important. What do you think of family and like friends even? What do you have to say? Yeah, absolutely, because it's a, you know, I guess it's a reality that you don't get the encouragement you should get. Right. But unfortunately, I guess nothing happens overnight, right? Nothing happens overnight. So you have to take a start from somewhere. Right. And I would highly encourage everyone that if you do have some passion, you do have some kind of interest, doesn't need to be art. It can be anything. If you're doing in the photography, or you're doing the filming, whatever passion, whatever hobby that you think that you want to take it to the next level, you should pursue that. Okay. Don't give up on that. All right. Well, we'll talk to you more. Now, Samia, आपसे बात करनी थी कि हमने obviously इनसे पूछा कि कब इन्होंने painting शुरू की. I know आप painting art आप पहले से करती थी, but Islamic art you just started some time ago. जी, it's a cliche. Obviously, मैं बचपन से painting. बचपन से जब से crayon से तब से पता चल जाता है. Absolutely. Okay. And you know, I think Islamic art, I would say 2007, 2008, I took a bit of a break, and I was helping my mom recover from some sickness. And while I was doing that, this became my therapy. So, you know, alhamdulillah, now I only do Islamic art. I used to do everything, but for some reason now I'm focused more on Islamic art now. Right. And you know, you just mentioned about why you were doing it, because you were kind of helping out your mom. लेकिन तो आपने कहा कि that kind of helped you relax. Do you think art, जब मैं art की बात करती हूँ, मुझे कोई दे देना, I don't think I can draw. That is. It doesn't matter. I think. But does it help you? Like, does it relax you? It's absolutely. It's you know, art, I think as a therapy is very, you know, under talked about, definitely. So, you know, I think it's something that's coming up now. But it is, and even, you know, the artists in our last festival, some of them were, you know, distracted, ill, and they wrote emails and said thank you so much, because it took us, हमारा mind ना उस issue से हट गया बिल्कुल. और जब हम लोग art कर रहे थे, we felt a little relief. So there is definitely, you know, that aspect to art. Of course. And Islamic art, I think, you know, ayats, so it helps you a little more. Now, Islamic art, for those people watching right now, हम तो खुशनसीब हैं कि हम Houston में रहते हैं, यहाँ पे ऐसे events होते रहते हैं. What is exactly Islamic art? I mean, I know there's different. I mean, I know the festival had 35 different artists. So, what is Islamic art for people watching? We had to be very strict. You क्या कहते हैं आप, inspired by Islamic art, architecture, ornamentation, जो होता है. You know, there's a lot of Pakistani artists and Muslim artists, they do landscape करते हैं, portraits करते हैं, पर हमें थोड़ा सा strict होना पड़ा था, focus Islamic art और वो inspiration जो inspired हुआ है through that. It doesn't have to be calligraphy, you know, classical calligraphy strictly, but जो inspiration Islamic art से आपको मिला है to paint. So. And obviously you've been doing this for such a long time. Do you think, and I had asked him that too, कि जो हमारे South Asians तो हैं, लेकिन आपके ख्याल में हमारे, how should I word this thing? In our culture, in our society, do you think थोड़ी सी और लोग enjoy करें to understand the essence of art, or do you think लोग अभी भी they still need to be more educated about this? I think the audience, the Desi audience, or, you know, in our community, उनको थोड़ा सा appreciation चाहिए.
कि ये आर्ट होता है. I you know when we go to art festivals हम लोग ये काफ़ी सुनते हैं इतना महंगा क्यों. But you know what ये इनको साल भर लगता है skills develop करने में और करने में you know to get it to this point कि वो sell कर सकते हैं. So overnight नहीं होता ये एक discipline होता है and लोगों को करना पड़ता है. You know it just doesn't happen overnight. So थोड़ी सी appreciation चाहिए होती है कि ये art you know ऐसे ही नहीं बैठ के घर में बना लेते हैं. It's hours and hours of कितना time. hours लगते हैं, दिन लगते हैं, महीने लग जाते हैं. I'm जी, sure some of the बिल्कुल, work I've seen. बिल्कुल. And I wish there was a way कि हमारे जो viewers हैं उनको मैं दिखाती जो आप लोग दोनों के art work है. But I think जैसे for example हिना है, आप स्कूलों के फॉल फेस्टिवल्स में जाएं, वहाँ पे हिना का ज़रूर एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है कि वो they're doing it. But even like यहाँ पे there are no बच्चे जो हैं वहाँ पे साउथ एशियन सब बच्चे नहीं हैं. इवन जो नॉन साउथ एशियन बच्चे हैं वो अपनी मेहंदी लगवा रहे हैं. तो आई थिंक इवन द इस्लामिक आर्ट आई थिंक एज अ सोसाइटी वी शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट थिंग, स्पेशली जो मेहनत कर रहे हैं. जैसे आपने कहा एक बात कि लोग कहते हैं कि यू नो फॉर एग्जांपल द बाइंग आर्ट पीस, अगर एक कोई देसी होगा कोई साउथ एशियन का जी आप आधी कीमतें कर दें या कि अच्छा हम 2 पीसेस लें तो आप सस्ता कर देंगे. बट इफ़ दे गो टू अ गैलरी इन डाउनटाउन और समथिंग they're not going to say anything. Anyway, I have to take a break. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा.